So today we are going to talk about light, reflection and refraction, your first chapter that we are going to start in this your 10th standard syllabus, that is light, reflection and refraction. Before knowing about that, we got to know what exactly is reflection, why we are going to talk about that. Before knowing about reflection, we are going to talk about light a little bit. Light, what is light? Light is a form of energy. Light is a form of energy, and light, how do we know that light is a form of energy? Well, you can see that when sunlight falls on an object, and if you have any lens or a mirror to concentrate that light at a particular angle on a certain point, there when it is going to be concentrated, there it becomes it transforms into heat energy, and that place starts heated up. सोलर फर्नेसेस या सोलर कुकर्स इसी तरीके से वर्क करते हैं, एंड लाइट hence is a form of energy. There are many ways it can be transformed into other forms of energy, जो कि आप जो है ना sources of energy नाम का जो चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हैं. So the first thing that comes into mind, why is light so essential for us? See, very simple thing. आपके पास आंखें हैं, आप आंखों से देख सकते हैं चीजों को, but the problem is when you enter a dark room, आप अंधेरे कमरे में अगर चले गए, you will not be able to see things. The reason is कि अगर आप अंधेरे कमरे में चले गए तो आप चीजों को नहीं देख सकते. The reason for that is light. When we are able to see objects only when light falls on a particular object, from there it reflects to our eyes. Then only we will be able to see things. Light falls on a particular object. For example, this is a ball pen that is present somewhere in a dark room. Light falls on this object, and from there it gets reflected to my eyes. Hence, I am able to see this ball pen. The way it is, the shape of this ball pen, the size of this ball pen, and the color of this ball pen, I am able to see. The more light falls in a dark room, the more things you are able to see. ज़्यादा चीजें आप देख सकते हैं. तो light enables us to see the things. How? Light falls on an object, from there it gets reflected to our eyes, and hence we are able to see things. If this is the case, then the case for reflection we are going to talk about. For reflection, we have to first know about the surfaces. And before talking about reflection, we have to talk about the objects and the surfaces. Surfaces, there are categorically there are two kinds of surfaces. One is smooth surface, that is called regular surface, or rough surface, or irregular surface. स्मूथ सरफेस से क्या होता है? सरफेस अगर स्मूथ है, जैसे कि आपके डेस्क है या मेटालिक यूटेंसिल्स हैं, एल्यूमिनियम या स्टील यूटेंसिल्स, उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो आपको पता है कि लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम देयर, स्मूथ सरफेसेस. तो वहां से क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. अगर आप एल्यूमिनियम यूटेंसिल या फिर आपके स्टील यूटेंसिल्स के सामने अगर आप करेंगे जाकर, तो आपकी इमेज उस सरफेस पे आपको नजर आएगा. स्टिल वाटर है, वो भी एक रेगुलर सरफेस हो जाता है. स्टिल वाटर में आप अपनी शक्ल देख सकते हैं, अपना फेस देख सकते हैं, आपका रिफ्लेक्शन आपको नजर आता है. नेक्स्ट है रफ सरफेस. रफ सरफेस या इरेगुलर सरफेस. रफ सरफेस मतलब जैसे कि क्ले होता है, जैसे कि पेपर होता है, जैसे कि स्टोन्स होते हैं, वॉल है, ये रफ सरफेसेस.
तो इनसे जो रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन इनसे जो होता है वो रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और वहां पे इमेज फॉर्म नहीं होती है। कौन कौन से सरफेसेस? रफ सरफेस जो होते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वहां से, पेपर है, क्ले है, आपके वॉल्स हैं, ब्रिक है, जितने भी ये इस टाइप के सरफेसेस हैं वहां से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हो जाएगा बट इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? स्मूथ सरफेस होना और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वेरी स्मूथ सरफेस होना, रेगुलर सरफेस होना, दैट विल reflect the light and that happens from the mirror. That happens from the mirror. So reflecting surfaces में भी दो हैं, those which form image, those which do not form image, those which reflect light but do not form image. अब जो those which reflect light but do not form image, उस कैटेगरी में हमारे पास क्या क्या है? पेपर है, क्ले है, आपके वॉल है, वॉल का सरफेस शाइनी होता है बट वहां से इमेज नहीं बनती है आपकी। आप अगर किसी वॉल के सामने, ब्राइट वॉल के सामने अगर जाकर करेंगे तो वहां से आपकी इमेज नहीं बनती है, जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल बी देयर। देन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में सबसे इजी और सबसे पहला जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में दो साइड्स होते हैं। पहली साइड है जो बैक साइड होती है उसको सिल्वर किया जाता है, सिल्वर्ड सरफेस बोलते हैं। सिल्वर्ड सरफेस मतलब क्या है कि उस सरफेस को ओपैक बना दिया जाता है। ओपैक मतलब which does not allow light to pass through it। तो ओपैक बना दिया जाता है उसको और एक साइड को रिफ्लेक्टिंग रखा जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है। ठीक है, reflecting surface, silver surface of a plane mirror. It is shown here. Take a snapshot of this one. Then you have, as I told you, rough and irregular surfaces, smooth and smooth surfaces. Regular reflection will be there. Rough surfaces, diffused reflection will be there. If you are talking about objects, you can see objects are. There are transparent objects which allow light to pass through it. Transparent objects हैं जो light को pass होने देते हैं। Translucent objects हैं। Transparent objects का example कैसा है कि glass है, glass के through light pass होती है। Are you able to see now? Just tell me in affirmative. So, glass है, transparent surface है. Transparent surface, what happens when ray of light falls on a transparent surface? It will allow it to pass through it. Suppose this is a transparent surface. Light will pass through it. Light will pass through that surface faithfully, completely. It will pass through it. That kind of surface is called as transparent surface. Then you have translucent surface. Translucent surfaces are those surfaces which allow small amount of light to pass through them. They will not pass complete amount of light through it, but they will allow only small amount of light to pass through it. And that is translucent object. That is called translucent surface or translucent objects. Those objects which allow small portion of light to pass through them are called as translucent objects. The surfaces
which do not allow light to pass through them are called opaque object. The light will not pass through them, but it will pass from their boundaries to cast a shadow of that object. For example, आपकी shadow है, आप this incident ray and reflected ray. But before talking about reflected ray, we are going to talk about the incident ray. This is incident ray. This is point of incidence, and we have this one straight line that we call as normal to point of incidence. We call this as normal to point of incidence. Incident ray is incident at this point P at the surface of the mirror, surface of the plane mirror. Incident ray, point of incidence. This is normal to the point of incidence drawn at the surface of the mirror. Now, there is one more quantity that comes into picture here, that is angle of incidence. One more ray is there, that is angle of reflection. So this is angle of incidence. Now, incident ray normal to the point of incidence, and the mirror is there, surface of the mirror. Now, laws of reflection. According to laws of reflection, the incident ray, reflected ray, and the normal. The incident ray, reflected ray, and the normal, all three lie in the same plane. मतलब ऐसा नहीं हो रहा इंसिडेंट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई, तो इंसिडेंट रे ऐसे आई, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि इंसिडेंट रे ऐसे आके नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई आपकी तरफ, ऐसा नहीं हो रहा. That means the incident ray, the normal drawn at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same